Assalamu alaikum students. How are you all? Students, I welcome you to tutrick.com, which is a free study platform for the students of metric, O levels, A levels, and FSC. Please register to tutrick.com, create your account there, visit www.tutrick.com, tutriq.com, and create your account there, fill the information which is required, and then join your study groups. वहाँ पर आपको schedule भी मिलेगा for your classes, and जो टॉपिक्स कवर होंगे वो भी आपको मिल जाएगा, और टाइम टेबल क्लासेस का जो है आपको टाइम टेबल भी मिल जाएगा, एंड देन यू कैन ज्वाइन क्लास ऑफ योर चॉइस। जिस भी टाइम पर वो होगी आप लॉग इन करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और ऑलमोस्ट एक वीक तक जो है ऐप भी लॉन्च हो जाएगी ऑन एप्पल स्टोर एंड गूगल प्ले स्टोर। आप वहां से ऐप डाउनलोड करके तो यू कैन इजीली लॉग इन एंड टेक योर क्लासेस बाय ज्वाइनिंग द ग्रुप्स। I am Misbah and I will be taking biology classes for O levels. I have almost 10 years teaching experience, or we have actually planned this for the students who are going to appear in CAIE 2022 examination, and we have planned to revise this whole syllabus in these 2 months. And along with this, we have also planned to solve some of the papers, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 6 की हम प्रैक्टिस भी करवाएंगे, एंड वी विल आल्सो शेयर द टिप्स फॉर गेनिंग गुड grades in O levels or distinction, right? अच्छा, we have actually revised first 4 chapters, और आज हमारा प्लान न्यूट्रिशन इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो है हम इसके साथ साथ ही हम पेपर 6 की एक एक जो उसमें क्वेश्चन जो टेक्निक्स होती हैं वो भी हम वन बाय वन साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट क्लास में वी स्टडीड about the internal structure, opening and closing, and discuss the fate of glucose which is synthesized during photosynthesis. What happens to that glucose, right? वो हमने डिस्कस किया था। आज जो है वो हम मिनरल्स डिस्कस करेंगे इन प्लांट्स। देयर आर 2 मिनरल्स व्हिच आर इन द सिलेबस, एक नाइट्रेट है और दूसरा मैग्नीशियम है, राइट? अच्छा, पहले हम देखते हैं कि व्हाई इज नाइट्रेट रिक्वायर्ड। प्लांट जो है, अच्छा, प्लांट को नाइट्रेट्स की जरूरत पड़ती है फॉर मेकिंग अमाइनो एसिड्स, राइट? ये जो नाइट्रेट्स हैं, these nitrates they will combine with amino acids, ठीक है, प्लस amino acids, और amino acids, sorry, they will actually combine with glucose, ओके? ग्लूकोज के साथ मिलके ये क्या बनाएंगे? दे विल मेक अमाइनो एसिड्स, and these amino acids will then make proteins, right? तो अगर नाइट्रेट्स जो है दे आर डेफिशिएंट, अगेन आप देखिए कि इसमें देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ द अमाइनो एसिड्स एंड नो फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन। और प्रोटीन हमें पता है दे आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द प्रोटोप्लाज्म, और ऑलमोस्ट 90% ऑफ द सेल इज मेड अप ऑफ protoplasm, made up of protein. If there will be deficiency of the nitrate, no amino acids will be formed, no proteins will be formed, so there will be no growth in plants if there will be deficiency of the nitrates. एक तो ये इस काम के लिए हमें चाहिए। अच्छा, दूसरा जो है नाइट्रेट्स, आप देखिए नाइट्रेट्स, these are also the source of nitrogen. नाइट्रोजन जो है it enters into the plants in the form of nitrates, and then plants can use the nitrogen from the nitrates for making amino acids, proteins. Other than this, it is also used for making DNA, RNA, because they also contain nitrogen. And along with this, chlorophyll जो है, that is an organic molecule, और chlorophyll में भी आपको प्रोटीन नाइट्रेट्स की जरूरत पड़ती है। अलॉन्ग विद मैग्नीशियम क्या होता है, देयर आर
nitrates, nitrogen required, and this nitrogen comes from the nitrate. Indirectly अगर ये हमें ज्यादा मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है तो we can also relate it in this way to the function of the nitrates. Indirectly हमें फिर ज्यादा डिटेल में जाना पड़ेगा, otherwise this is sufficient for your syllabus. Okay, second nitrate which is in the syllabus, that is magnesium, and magnesium is required for the synthesis of chlorophyll. And we studied in previous class कि जो chlorophyll है, chlorophyll converts solar energy into chemical energy, और हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, it is required for photosynthesis. राइट अगर हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे एज वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ O3 तो उसमें वी नीड मोर डिटेल्स. So magnesium is required for making the chlorophyll. If there is deficiency of magnesium, there will be no chlorophyll, right? और अगर chlorophyll नहीं होगा तो plants will not capture sunlight and they will not carry out photosynthesis. अच्छा, अब अगर ये ज्यादा मार्क्स के लिए हमें क्वेश्चन आता है तो हाउ वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट, ये बात तो हमने बता दी दैट मैग्नीशियम इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग क्लोरोफिल. Right, if there is deficiency of magnesium, so there will be no chlorophyll. Okay, if there will be no chlorophyll, no sunlight will be, no solar energy will be converted into chemical energy, and no photosynthesis will take place. Okay, अब हमने इस further expand कैसे करना है for more marks. If there will be no photosynthesis, right, then no glucose will be formed. अब अगर ग्लूकोज नहीं होगा तो देन जो ग्लूकोज के फंक्शंस हैं दे विल नॉट बी परफॉर्म्ड इनटू द सेल. तो हमने इसको ज्यादा मार्क्स के लिए फिक्स कर दिया 5 मार्क्स, तो हमने इसको देन रिलेट करना है विद द फंक्शंस ऑफ द ग्लूकोज, और फिर ईच फंक्शन विल कीप ऑन गिविंग अस 1 मार्क. ठीक है, तो इससे हमारे मार्क्स बढ़ जाएंगे. Next is yes, let's discuss the experiments. अच्छा, these are related to paper 6, इसमें जो हम chemicals यूज करते हैं, और इसी के जो questions हैं वो आपको पेपर 1 में भी आते हैं, पेपर पेपर 1 में भी आते हैं, पेपर 2 में भी आते हैं. सो वी हैव टू सी के कौन से केमिकल्स यूज हो रहे हैं. इट्स बेटर कि जितने भी इन एक्सपेरिमेंट्स में केमिकल्स यूज होंगे हम उनको एक ही स्लाइड पर डिस्कस कर लेंगे या स्टार्टिंग में हम लिख लेंगे. अच्छा, एक्सपेरिमेंट्स जो हैं स्टार्ट टेस्ट, राइट, देन एक्सपेरिमेंट्स अदर आर टू फाइंड आउट द लिमिटिंग फैक्टर्स फॉर फोटोसिंथेसिस. राइट, हमने पढ़ लिया है कि सनलाइट can be the limiting factor, carbon dioxide can be the limiting factor, and chlorophyll can be the limiting factor. So we are going to design these experiments. अच्छा, third experiment जो है that is to find out which gas is given off during photosynthesis. Right, we discussed the equation और हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है गैस, ऑक्सीजन गैस is given off during photosynthesis. इसका भी हम एक्सपेरिमेंट डिजाइन करते हैं. Right, so let's start. अच्छा, necessity of different nutrients for photosynthesis में भी अगेन हम सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल को देखेंगे. राइट, अच्छा, अब एक्सपेरिमेंट डिजाइन करते हुए बेटा हमने देखना होता है कि हमारे पास 2 फैक्टर होते हैं. राइट, वी हैव 2 फैक्टर्स. एक हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, okay? One is the experimental group and other is the control group. Always remember कि control group जो है it is taken for comparison. अगर हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं और उसके रिजल्ट्स को हमने देखना है कि whether they are ट्रू और फॉल्स, तो उसके लिए हम कंपैरिजन, उसके साथ कंपैरिजन के लिए वी नीड एन अदर सेटअप, और उस सेटअप को हम कंट्रोल ग्रुप या कंट्रोल सेटअप बोलते हैं. एंड कंट्रोल सेटअप में हम ऑलमोस्ट फोटोसिंथेसिस के केस में वी विल ऐड ऑल द वेरिएबल्स. अब आप देखिए कि अगर हम फोटोसिंथेसिस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं इन प्लांट्स में, एंड वी नो कि प्लांट्स को जो है सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इज रिक्वायर्ड अलोंग विद क्लोरोफिल. ठीक है, ये चीजें चाहिए होती हैं फॉर फोटोसिंथेसिस.
और हम अगर जो है नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फाइंड करना चाहते हैं, whether carbon dioxide is important for photosynthesis or not, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करेंगे into control group. So it means it will have all the variables along with carbon dioxide. एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को हम omit करेंगे. So it will not have that particular or that one variable which we are going to find out or which we are going to study. कंट्रोल ग्रुप विल हैव ऑल द वेरिएबल्स. एक ही चीज, अच्छा, और पर्पस ऑफ कंट्रोल ग्रुप इज दैट इट इज टेकन फॉर कंपैरिजन विद द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. दिस इज समटाइम्स मोस्टली आस्क्ड in paper 6 what is the purpose of control group. So it is for the comparison. अच्छा, यहाँ पर आप देखिए बेटा, as we have written कि it contains all the variables. Okay, it contains all the variables. और ये all the variables जो है it is true for photosynthesis. Photosynthesis में control group will have all the variables, but अगर हम ये experiments करते हैं for enzymes, तो enzymes के केस में experimental and control group will be reversed. Experimental group will have all the variables. All means that if we are going to find out the activity of some enzyme, तो हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में वो एंजाइम ऐड करेंगे, और कंट्रोल ग्रुप में वी विल ओमिट दैट वेरिएबल. एंजाइम हम कंट्रोल ग्रुप में ओमिट करेंगे, ऐड नहीं करेंगे. एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हम उसको ऐड करेंगे. तो दिस इज ऑपोजिट इन केस ऑफ एंजाइम्स. तो आपने देखना है कि हम कौन सी इन्वेस्टिगेशन डिजाइन कर रहे हैं, राइट, और उसमें फिर आपने देखना है कि हमें वेरिएबल्स ऐड करने हैं या हमें ओमिट करने हैं, वेदर इट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस और एंजाइम्स. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट जो है इसमें कुछ केमिकल्स हैं. दिस इज ग्लोइंग स्प्लिंटर इज नॉट द केमिकल. ठीक है. ओवरऑल इसमें जो हम यूज करते हैं, फर्स्ट इज द आयोडीन. और आयोडीन हम क्यों यूज करते हैं? दिस इज यूज्ड टू टेस्ट, दिस इज यूज्ड टू टेस्ट स्टार्च. ओके. अच्छा, अब आयोडीन जो है, आयोडीन इज ऑफ brown color, and with iodine it turns blue black, and this is tested for starch. अगर स्टार्च जो है प्रेजेंट होगा, आयोडीन विल टर्न फ्रॉम ब्राउन टू ब्लू ब्लैक. दिस इज द इंडिकेशन दैट स्टार्च इज प्रेजेंट. अच्छा, इनमें यहाँ पर हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे इन विच वी विल यूज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडा लाइम, which is the combination of sodium hydroxide and calcium hydroxide. अब ये जो तीन केमिकल्स हैं ये हम यहाँ पर ऐड करेंगे, और इन तीनों केमिकल्स का जो पर्पस है, all these three they absorb right, they all absorb carbon dioxide. All these three will absorb carbon dioxide. So when we will have to omit carbon dioxide from the experimental setup, तो हम इन तीनों में से कोई भी केमिकल विच इज अवेलेबल इनटू और लेबोरेटरी हम ऐड कर सकते हैं, राइट. अच्छा, समटाइम्स हम देखेंगे they would have added potassium hydroxide at one place and sodium hydroxide at another place in the same experiment. ठीक है. तो इन दोनों का पर्पस जो है, दे बोथ विल एब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड. हम सेम केमिकल भी यूज कर सकते हैं. अच्छा, नेक्स्ट इज द glowing splinter, and glowing splinter actually this is used to test the oxygen gas, and it glows brighter in the presence of oxygen.
अच्छा, नेक्स्ट जो बाइकार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स भी आप यूज कर सकते हैं और आप कार्बोनेट्स के सॉल्ट्स भी यूज कर सकते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, या हम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट हम ये भी यूज कर सकते हैं। दिस इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। हमें फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करनी होती है। सो बाइकार्बोनेट्स आर यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा जो है लाइम वाटर इज आल्सो यूज्ड, दिस इज यूज्ड टू टेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, और लाइम वाटर जो है इट टर्न्स टर्न्स मिल्की विद कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो ये कुछ केमिकल्स हैं जो हम टेस्ट के लिए यूज करते हैं या हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन करते वक्त इनको यूज करेंगे। एंड आई डिस्कस्ड देयर पर्पस इन द स्टार्ट। अच्छा, इसके साथ साथ जो है हम वैक्स भी यूज करेंगे, ऑयल भी यूज करेंगे या पॉलीथीन बैग भी यूज करेंगे, राइट। तो इनका पर्पस है टू प्रिवेंट वाटर लॉस, ठीक है। जहां पर भी हम वैक्स, ऑयल, पॉलीथीन बैग यूज करते हैं टू प्रिवेंट वाटर लॉस। अच्छा, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है दैट इज टू टेस्ट द स्टार्च। हाउ विल वी टेस्ट स्टार्च? इसमें आप देखें, फॉर टेस्टिंग स्टार्च वी विल टेक अ लीफ। लीफ को हम क्या करेंगे, प्लक ऑफ करेंगे। अच्छा, इस प्लक ऑफ करने से पहले वी विल डी स्टार्च द प्लांट। De-starch plant means that we will keep the plant into dark for 2 to 3 nights. What will happen then? अच्छा, then we will place it into the dark for 2 to 3 nights. तो उसके अंदर जो present starch होगा that will be used by the plant. Okay, वो उसको use कर लेगा। अब हमने प्लांट को क्या करना है, we will place the plant into sunlight ताकि वो photosynthesis करे। नेक्स्ट टू 12 आवर्स के लिए रख दें, 6 to 8 आवर्स के लिए। आफ्टर दैट वी विल प्लक अ लीफ एंड वी विल टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इनटू दैट लीफ। जब हम उसको सनलाइट में रखेंगे तो इट विल कैरी आउट फोटोसिंथेसिस एंड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इट विल मेक glucose. That glucose will be used by the plant and extra will be converted into starch जो स्टोर हो जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स, या ये हमें क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी मिलेगा। तो अब हमें क्या करना है, स्टार्च टेस्ट करना है, ठीक है। डिस्टार्च करने के बाद हम प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए रखेंगे एंड देन वी विल प्लक इट्स लीफ। लीफ को हम बॉईल करेंगे इनटू वाटर। What is the purpose of boiling leaves into water? Yes, Hashif, you have joined the class. If you would like to answer, हम boiling water में leaf को क्यों place करेंगे? Boiling water means very 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 high temperature, right? हाई टेम्परेचर होता है तो उससे क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन इज denatured एंड इट मेक्स द सेल मेम्ब्रेन परमिएबल टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो हम यहाँ पे यूज करेंगे या डिफरेंट केमिकल्स। आयोडीन जैसे हम यहाँ पर यूज करेंगे तो बॉइलिंग विल, ओके, यस सिमाब, व्हाट विल बी द पर्पस ऑफ एडिंग दिस, यू कैन टेक्स्ट। Purpose of boiling into water is that it will make the cell membrane permeable. ओके, अच्छा, वाटर से हम बॉइलिंग लीफ को निकालेंगे और उसके बाद हम इसको बॉईल करेंगे इनटू एथेनॉल। अच्छा, यहाँ पर जो है फॉर P6 सेफ्टी मेजर्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट। हमने सेफ्टी मेजर मेंशन करनी होती है लाजमी। इन द एंड वी विल डिस्कस 4-5 सेफ्टी मेजर्स, और जब सेफ्टी मेजर्स पेपर 6 में पूछे होते हैं तो देन इट मींस कि उसके मार्क्स हैं, तो वी हैव टू राइट द सेफ्टी मेजर्स। अच्छा, एज वी नो कि जो एथेनॉल है, एथेनॉल इज कंबस्टिबल, इट कैन कैच फायर। तो हम कभी भी लीफ को एथेनॉल में डायरेक्टली बॉयल नहीं करेंगे, वी विल यूज वाटर बाथ।
एक चीज वाटर बाथ जब हम यूज कर रहे हैं तो दिस विल बी द सेफ्टी मेजर। सेकेंड आप देखें कि फ्लेम है तो हम फ्लेम को वी विल पुट ऑफ द फ्लेम। ठीक है, अगेन द रीजन इज कि एथेनॉल जो है दिस इज कंबस्टिबल, तो पुटिंग ऑफ द फ्लेम ये भी हमारा सेफ्टी मेजर हो जाएगा। टू सेफ्टी मेजर्स। अच्छा, इसके अलावा हम थर्ड देख लेते हैं कि व्हाइल वी आर डीलिंग विद द ओवरऑल एक्सपेरिमेंट्स में सेफ्टी मेजर क्या हो सकता है व्हाइल वी आर डीलिंग विद द हीटिंग, तो उसमें फ्लेम है, वी कैन वेयर गोगल्स, राइट। तो ये हमारे कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं जो हम क्या करते हैं, हमें सेफ्टी मेजर प्रिकॉशंस लेनी चाहिए वाइल परफॉर्मिंग दिस एक्सपेरिमेंट। एथेनॉल में हमने इसको बॉईल किया है, एथेनॉल में हम इसको जब बॉईल करेंगे तो कलर ऑफ द एथेनॉल विल बिकम ग्रीन। यस, कैन यू टेल मी बेटा व्हाई इट विल बिकम ग्रीन सिमाव? It will become green because chlorophyll will dissolve into ethanol. अच्छा, अब क्लोरोफिल जो है वो वाटर में डिजोल्व क्यों नहीं हुआ? व्हाई वी हैव यूज्ड एथेनॉल? बिकॉज क्लोरोफिल इज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड यू हैव स्टडीड इन केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज डिजोल्व्ड इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। एथेनॉल इज ऑर्गेनिक, इट विल डिजोल्व एथेनॉल। ठीक है, आफ्टर 10 मिनट्स आप देखेंगे कलर ऑफ एथेनॉल विल बी ग्रीन, इट विल हैव क्लोरोफिल इनटू इट। अब हम क्या करेंगे, अगेन वी विल टेक दिस लीफ और इसको हम दोबारा हीट करेंगे इनटू वाटर, हीट करेंगे, राइट। और दोबारा हीट करने का पर्पस क्या है? जब हम इसको दोबारा हीट करेंगे तो इट विल अगेन बिकम सॉफ्ट एंड ब्रिटल एंड इट विल फर्दर मेक द membrane और it will become permeable to iodine. Iodine will move inside, तो तब वो स्टार्च प्रेजेंट जो स्टार्च प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करेगा एंड इट विल गिव अस कलर। ओके, दिस इज द वे हाउ वी परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स। सेफ्टी मेजर्स भी हमने इसमें लिखने हैं और हमें रीजंस भी लिखने हैं व्हाई वी हैव यूज्ड बॉइलिंग वाटर एथेनॉल एंड व्हाई वी आर प्लेसिंग इट इनटू वाटर अगेन। अच्छा, इन द एंड हम लीफ को place करेंगे into on petri dish and then we will add starch and if the color of the starch will turn from brown to blue black it means that it contains or it has synthesized, starch will turn from brown to blue black, right, it will turn from brown to blue black. दिस इज द स्टार्च टेस्ट। अच्छा, अब हमने जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट्स करने हैं फॉर फोटोसिंथेसिस उसमें इन द एंड हमें क्या करना है, ये स्टार्च टेस्ट परफॉर्म करना है एंड वी हैव डिस्कस्ड स्टार्च टेस्ट हमने किस तरह परफॉर्म किया है, बाकी एक्सपेरिमेंट्स में भी हम इसी तरह ही परफॉर्म करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखते हैं। अच्छा, इस केस में बेटा वी विल नॉट यूज एनी कंट्रोल, ठीक है, इस केस में हम कंट्रोल में यूज करेंगे और बाकी में जो है हम कंट्रोल यूज करेंगे। अच्छा, आपके देखें दिस इज द एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट द नेसेसिटी ऑफ सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। एज वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द नेसेसिटी ऑफ सनलाइट, तो हमारे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में सनलाइट जो है इट विल बी एब्सेंट एंड इन कंट्रोल ग्रुप सनलाइट विल बी प्रेजेंट, राइट। अच्छा, इस केस में हमने क्या करना है, अगेन वी विल टेक अ प्लांट, उसको हम डिस्टार्च करेंगे बाय प्लेसिंग इट इनटू द डार्क और डिस्टार्च करने के बाद अगेन वी विल प्लेस इट इनटू द सनलाइट सो दैट इट शुड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, अगर ये हमारा कंट्रोल ग्रुप है। अच्छा, हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है तो हम डिस्टार्च करने के बाद प्लांट को लेंगे और प्लांट को हम प्लेस करेंगे इनटू अ सेटअप। अच्छा, यहाँ पर आप डायरेक्ट देखें, आप प्लांट लेंगे डिस्चार्ज करने के बाद और प्लांट के एक लीफ को, यहाँ पर हमने लीफ को प्लक नहीं करना, लीफ विल बी विद द स्टेम और हम पॉटेड प्लांट भी ले सकते हैं इस केस में। व्हाट विल वी डू नेक्स्ट, हम इस पे कार्बन ब्लैक पेपर की स्ट्रिप्स कट करेंगे ऑलमोस्ट ऑफ इक्वल साइज। इन स्ट्रिप्स को हम ऑन द अपर सरफेस ऑफ लीफ एंड ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीफ प्लेस करेंगे। What will be the purpose of these black strips? These black strips are impervious to light or they will cut down the supply of light to the plant.
अब आप देखें कि लाइट और सनलाइट हमने ओमिट कर दिया बाय यूजिंग दिस ब्लैक पेपर, राइट। तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप रेडी हो गया। ओके, अच्छा पर्पस हमने बता दिया है। अब हम क्या करेंगे, हम सेम वे में इस प्लांट का, इसी के ऊपर ही द एरिया विच इज ग्रीन एंड विच इज प्रोवाइडेड विद द सनलाइट, हम इस एरिया को भी एज अ कंट्रोल यूज कर सकते हैं। बट हम एक्सपेरिमेंटल डिजाइन करते हुए हम एक कंट्रोल ग्रुप लाजमी लेते हैं फॉर कंपैरिजन। अच्छा, कंट्रोल ग्रुप में हमने क्या करना है, ब्लैक पेपर से आप बेशक उसको कवर ना करें, ठीक है, वो भी ठीक है। अगर आप ब्लैक की जगह यू कैन यूज द ट्रांसपेरेंट पेपर्स, ट्रांसपेरेंट विल अलाउ द सनलाइट टू पास थ्रू इट। इसका मतलब है कि हमारे कंट्रोल ग्रुप में देयर विल बी सनलाइट प्रेजेंट, हम सनलाइट को ओमिट नहीं करेंगे इनटू कंट्रोल ग्रुप। अच्छा, आफ्टर कवरिंग इट विद ब्लैक पेपर स्ट्रिप्स वी विल फिक्स इट विद पेपर क्लिप्स और हम इसको प्लेस कर देंगे इनटू सनलाइट, राइट। अच्छा, 6 to 8 hours, 12 hours it will carry out photosynthesis. Okay, after 8 hours we will again pluck this leaf which was covered with the black paper strips. We will remove the strips और हम इस लीफ के साथ क्या करेंगे, और इस लीफ का we will again perform the starch test जैसे कि we have discussed here. We will boil that leaf into water, then into ethanol, and then again into water, and then we will add iodine in the end. If it turns blue black, it means that plant has carried photosynthesis, and if it stays brown, another plant has no starch, that's why it is brown. अच्छा, अब हम यहाँ पे रिजल्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये हमारे पास ब्लैक पार्ट है तो इट मीन्स कि यहाँ पर क्या होगी, देयर विल बी नो फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अच्छा, इस पार्ट के ऊपर नो फोटोसिंथेसिस, तो यहाँ पर जो है आयोडीन का कलर क्या होगा, यस सिमाब, यू कैन टेक्स्ट मी योर क्वेश्चन एंड आई विल आंसर इन द एंड। मिस, इज इट नेसेसरी कि हम स्टार्चेस में इथेनॉल यूज करें, उसके अलावा कुछ यूज कर सकते हैं? माइक text me because mic is not loud. Yes, I've heard your question and I'm going to answer. एथेनॉल हम बेटा इसमें कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज कर सकते हैं, अदर देन एथेनॉल भी हम यूज कर सकते हैं, बिकॉज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सॉल्वेंट, ठीक है, विच डिसॉल्व्स क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल डिसॉल्व होते हैं तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, हम एथेनॉल की जगह प्रोपेनॉल भी यूज कर सकते हैं, या हम जो है कोई और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी यूज कर सकते हैं, राइट। अच्छा, और ओके, आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। आप या तो इसमें मुझे टेक्स्ट कर दें, देन आई विल आंसर इन द एंड। ध्यान में देख लिया, इसमें दिस पार्ट विच इज कवर्ड विद द ब्लैक पेपर, यहाँ पर आयोडीन जो है इट विल स्टे ब्राउन। Why? Because यहाँ पर क्या, it will stay brown because यहाँ पर sunlight नहीं थी, तो यहाँ पर photosynthesis नहीं होगी। हुआ तो not synthesized glucose, they have not synthesized starch from the glucose, so iodine will stay brown at this place. अच्छा, दूसरी प्लेस आप देखें, दिस ग्रीन वन के ऊपर क्या होगा, प्लांट was provided with the sunlight, या कंट्रोल ग्रुप भी हम यहाँ पे कह सकते हैं, और if it's provided with the sunlight तो यहाँ पर photosynthesis होगी, ग्लूकोज बनेगा and iodine will turn blue black at this point where sunlight was provided. Okay, इसी तरह हमने दूसरा सेटअप जो है अगेन स्टार्ट टेस्ट हम करेंगे। अच्छा, सेकंड सेटअप जो है, दिस इज फॉर द फाइंड आउट द नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। इसमें हम बेल जार लेते हैं, दिस इज द बेल जार। अच्छा, बेल जार में वी हैव टेकन दिस पॉटेड प्लांट, और पॉटेड प्लांट को भी हमने फर्स्ट डिस्चार्ज किया। डिस्चार्ज करने के बाद अब हमने इसको क्या करना है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप इसका लगा के, तो हमें इसको सनलाइट में रखना है सो दैट इट शुड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। इसके साथ साथ हमने कंट्रोल ग्रुप को भी एज इट इज ही ट्रीट करना है। डिस्चार्ज करना हमने,
डिस्चार्ज करने के बाद हमने क्या करना है, स्मॉल पॉटेड प्लांट लेंगे, वी विल प्लेस इट इनटू द बेल जार एंड बेल जार इज ऑफ ग्लास। तो इसका मतलब है कि बेल जार में से प्लांट को सनलाइट मिल रही है, इट इज गेटिंग सनलाइट थ्रू दिस ट्रांसपेरेंट बेल जार। सनलाइट हमने प्रोवाइड कर दी है। as this is for the carbon dioxide, so we will omit only one factor which is the carbon dioxide। अच्छा, इसमें जो है आप देखें तो we will place potassium hydroxide, we have discussed it in the start। potassium hydroxide हम यूज करेंगे for absorbing carbon dioxide। inside आप देखें we have placed here a petri dish, राइट, जिसमें हमने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड लिया हुआ है। अच्छा, ऊपर आप देखें एट द माउथ ऑफ द बेल jar we have added soda lime। soda lime is mixture of calcium hydroxide and sodium hydroxide, right? soda lime is mixture of calcium hydroxide प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर डायरेक्टली बेटा हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी यूज कर सकते हैं, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी यूज कर सकते हैं और सोडा लाइम भी यूज कर सकते हैं। वी हैव डिस्कस्ड इट इन द बिगिनिंग। इन तीनों का पर्पस क्या है, ऑल दीज थ्री विल एब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब करेंगे तो इट मीन्स के हमारे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप से कार्बन डाइऑक्साइड ओमिट हो जाएगी। While we have placed it inside and while we have placed it at the mouth of the bell jar, reason is कि जो atmospheric carbon dioxide है it will be absorbed by the soda lime। remaining, if some carbon dioxide is present into the bell jar, as gases are also present into the soil, there is soil into this pot, तो उसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगी तो इट विल बी एब्सॉर्ब्ड बाय दिस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। और प्लांट्स आर carrying out photosynthesis, right? Yeah, plants are carrying out respiration। respiration में if carbon dioxide is being released into the jar तो वो भी absorb हो जाएगी by this potassium hydroxide। तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड को omit करना है, absorb करवाना है by this soda lime and potassium hydroxide outside भी, और if it's present inside the jar तो वो भी हम क्या करेंगे, absorb करवा लेंगे। It is covered by the polythene bag। again polythene bag से cover करने का भी यही purpose है कि if carbon dioxide is present into the pot that is taken by this, और अच्छा, पॉलीथीन से जो हम इसको कवर करेंगे, एक तो टू एब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड और सेकंड जो है polythene is not as such required here because this is not being done for the transpiration। ठीक है, अगर हम पॉलीथीन से कवर नहीं भी करते तो देन इट्स ऑल्सो कि हमारा एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। कंट्रोल ग्रुप में हम क्या करेंगे, वी विल अगेन सेट अप इन द सेम वे, और यहाँ पर इन पेट्री डिश वेयर वी एडेड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड वी विल ऐड वाटर, या आप इसको एम्प्टी भी प्लेस कर सकते हैं, वाटर भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एंड एट द माउथ ऑफ द जार वेयर वी एडेड सोडा लाइम टू एब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, वहां पर आप इसको एम्प्टी भी प्लेस कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो यूज द पेबल्स। ओके, अच्छा, अब हम इस सेटअप को प्लेस करेंगे इनटू द एटमॉस्फेयर फॉर 6 to 12 आवर्स। इट विल कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में अगेन इट विल मेक ग्लूकोज व्हिच विल बी कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। और अब हम क्या करेंगे, इसका स्टार्च टेस्ट करेंगे दोनों का। वी विल टेक लीव फ्रॉम दिस कंट्रोल सेटअप एंड वी विल टेक लीव फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अब स्टार्च टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हमने पहले डिस्कस किया था, अगेन क्विकली आई एम गोइंग टू डिस्कस इन 1 to 2 minutes। We will pluck the leaf and we will boil it leaf into the boiling water, right? As some of the students have joined now, so I'm quickly going to revise how we are going to perform the starch test। अच्छा, we are going to pluck the leaf from this experimental setup and we are going to pluck a leaf from this control setup, और दोनों को हम as it is treat करेंगे, हम दोनों का starch test perform करेंगे। We will boil this leaf into the boiling water and purpose of boiling it into the boiling water is to make the cell membrane permeable।
डिटेल में मैं आपको रीजन बता देती हूँ. आज वी स्टडीड सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर. और लिपिड को जब हम बॉयल करते हैं हाई टेम्परेचर तो वो मेल्ट हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ विच द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज डिस्ट्रॉयड एंड इट बिकम्स परमिएबल टू एवरीथिंग. हमें Miss, इसमें आयरन ऐड करना है. माइक इज नॉट अलाउड प्लीज. यू कैन कंटिन्यू. Miss Misbah, यस प्लीज. उम्मे हबीबा, Miss, प्लीज. जब ये बॉयल जब हम बॉइलिंग वाटर में डाल रहे हैं तो can't you put it like directly? Miss, can't you put the leaf directly into the water? Yes, we can put leaf directly into the water. We can put leaf directly into the water. Okay. Okay, we will boil it into the water. This will make the cell membrane permeable, right? And the second, again, we will boil it into, after 10 minutes, we will boil it into the ethanol. Purpose of boiling it into the ethanol is that it will dissolve its chlorophyll, as ethanol is organic and chlorophyll is also organic. So after 10 minutes, the color of the ethanol will also change from white to green because it will absorb the chlorophyll and chlorophyll is of green color. Okay? Then we will take this leaf and again boil it into the water. Why we are boiling it into the water again? The reason is that it makes the leaf more permeable to iodine, or to make the leaf more permeable to iodine हम इसको again boil करते हैं into water. It's very simple. अब देखें start test में पहले हमने इसको boil किया into water 10 minutes. Then we have boiled it into the ethanol. Right, again we have boiled it into the water, and in the end we will add iodine onto the leaf. Precautionary measures मैं आपको दोबारा बता देती हूँ. अच्छा, we will use water bath for boiling it into the ethanol and we will put off the flame. Reason is as it is the combustible. तो हमें ये दो प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं और सेफ्टी मेजर्स लेने हैं. सेफ्टी मेजर्स हम वायर गॉज यूज करते हैं फॉर होमोजेनियस मिक्सिंग. ओके, और इसमें यू कैन ऑल्सो वेयर गोगल्स व्हाइल यू आर डीलिंग विद द फ्लेम. These are the safety measures. Whenever in paper 6, while designing an experiment, safety measure is written, तो आपने वो लाजमी मेंशन करना होता है safety measure. Right? अच्छा, in the end we will add iodine. If the color of the iodine changes from brown to blue black. Adiba, you are joining late and this is important for you. So I'm going to discuss here. These were some of the chemicals जो हम यूज करते हैं और इनका पर्पस क्या है. ठीक है, यहाँ पर हम आयोडीन यूज करते हैं. दिस इज फॉर टेस्टिंग स्टार्च एंड आयोडीन इज ऑफ ब्राउन कलर. इफ इट टर्न्स ब्लू ब्लैक मींस दैट इट कंटेन्स स्टार्च. राइट, और बाकी भी हमने जो कुछ किए हैं, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड यू कैन राइट डाउन व्हाट फॉर व्हाट पर्पस दीस केमिकल्स आर यूज्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट. राइट, अच्छा अब आप देखिए कि हमारे पास प्लीज आंसर इन चैट बॉक्स. Which leaf will turn blue black? The one from experimental group will turn blue black, or the one from control group will turn blue black? Yes, which one will turn blue black? The one in experimental group will stay brown because no photosynthesis has taken place. Yes, yes, map from control setup leaf will turn blue black because it has carried out photosynthesis and it has synthesized glucose and it has synthesized starch. So that starch will react with the iodine and it will turn blue black. Okay, in experimental group it will stay brown. So this comparison will let us know that carbon dioxide is very important for photosynthesis. If carbon dioxide is missing, then no photosynthesis takes place. सेम में हम जल्दी से नेक्स्ट भी कर लेते हैं as we have to wind up this chapter today. Another important factor for photosynthesis is chlorophyll.
There are some of the plants which are growing in soil which is deficient in magnesium, तो उनमें क्लोरोफिल की डेफिशिएंसी हो जाती है. And there is deficiency of the chlorophyll into the plants. They have variegated leaves. As you can see here, variegated leaves have whitish areas over there. ठीक है, या हम स्पॉट्स भी कह सकते हैं, स्पॉट्स भी हो सकते हैं, व्हाइटिश एरिया भी हो सकता है, विच हैज सम पार्ट ग्रीन एंड सम पार्ट हैज ब्राउनिश और येलोइश पार्ट. येलोइश होता है मोस्टली बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ द chlorophyll, right? अच्छा, those plants which are growing in the soil which is deficient in magnesium, we will pluck off their variegated leaf. Variegated leaf will have yellow area deficient in chlorophyll and green area which will contain chlorophyll. Okay, Duranta is one of the example. उसका हम लीफ प्लक करेंगे. अगेन हम क्या करेंगे, लीफ का स्टार्च टेस्ट करेंगे एज इट इज. अच्छा, इससे पहले हमें हमेशा प्लांट को डी स्टार्च करना है ताकि उसमें जो यूज्ड स्टार्च है दैट शुड बी यूज्ड बाय द प्लांट, स्टोर्ड स्टार्च शुड बी यूज्ड बाय द प्लांट, और बाद में हमें इसको सनलाइट में प्लेस करना है सो दैट इट शुड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. अगेन हम इसका स्टार्च टेस्ट करेंगे एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर. ठीक है, और स्टार्च टेस्ट में यस बेटा टेल मी द रिजल्ट्स, व्हाट विल बी द रिजल्ट्स. इसी लीफ के ऊपर what will be the color of iodine on yellow area and what will be the color of iodine on green area. Yellow area does not have chloroplast and green area contains chloroplast. So the results are also written in this. Green area iodine will turn blue black because of the starch presence, and in this yellow area it will turn brown. Okay, ये results हैं. Next जो है which gas is given off during photosynthesis. अच्छा, इसमें अच्छा ये जो है हम इसमें पेपर 2 सॉल्व करते हैं. Let's end here. Okay. Yes. अच्छा, this is the question in front of you. उसका हम solve करते हैं as we have studied plant nutrition. So it's also related to this topic. Figure 5.1 shows a section through a microscopic one-celled organism. This is a unicellular organism. Okay, अब देखिए this is unicellular organism. One-celled organism है, often found growing on the bark of the trees. ये हमने वन सेल ऑर्गेनिज्म का सेल दिखाया होगा. It has a cell wall. It has chloroplast. Can you see the shape of the chloroplast? Okay. अच्छा, it has nucleus. Its nucleus is in the center and E is the cytoplasm. So just the identity of the region labeled E. Yes. What is E, Simar? E is yes, good. E is the protoplasm, or write down cytoplasm because protoplasm. This is cytoplasm. प्रोटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस प्लस सेल मेम्ब्रेन भी इंक्लूडेड होते हैं. ठीक है, सो दे आर जस्ट आस्किंग अबाउट दिस एरिया E1, तो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे इट इज this is protoplasm, sorry, this is cytoplasm. Okay, list the structures visible in figure 5.1 which suggest that this organism might be a plant. Plant हो सकता है. ठीक है, we have studied plant cell, और प्लांट सेल में हमने कुछ फीचर्स देखे हैं विच आर नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल. तो आप वही वाले फीचर्स भी बता सकते हैं एज इट इज फॉर 2 मार्क्स, राइट, एज इट्स फॉर 2 मार्क्स. तो आप इसमें देखें कि कौन से फीचर्स हैं विच विल लेट अस नो दिस माइट बी अ प्लांट सेल.
सेल वॉल प्लांट सेल में होती है। यस। अच्छा, इसके अलावा और प्लांट सेल के अंदर क्या होता है? दो फीचर्स बताने हैं, वेरी सिंपल। ठीक है, एक तो हम यहाँ पे लिखते हैं इट हैज सेल वॉल। Yes, good. One chloroplast. Yes, one is cell wall and other is the chloroplast. Two features are required: cell wall and chloroplast. दो फीचर्स से हमें पता चल रहा है कि it can be a plant cell. Otherwise, we have studied plant cell also has a larger vacuole, but इसके अंदर vacuole हमें कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा. तो जो इसमें visible है, we will write down only those features. Visible हम mention करेंगे. Next is list the ways in which this cell differs from a palisade cell in plant leaf. Plant इस सेल जो है पैलिसेड सेल दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस सेल, क्या हो सकता है? ठीक है, पैलिसेड सेल is like this. It has larger vacuole in the center. It has chloroplast, these shape. ठीक है, अच्छा सेल वॉल इसकी भी है और सेल वॉल उसकी भी होती है. It has cell wall. So it has nucleus. That one is nucleus. Okay, it has cell wall, cell membrane, cytoplasm. Okay, this is the nucleus. This larger one is vacuole, and these are the chloroplast. Okay, palisade cell. अच्छा, अब जो है this question is for 4 marks. अब देखें, this is for 4 marks. हमने अब इसे 4 मार्क्स के लिए अटेम्प्ट करना है, तो एटलीस्ट देयर शुड बी 4 डिफरेंसेस. कौन से हो सकते हैं? शेप ऑफ द सेल. शेप आप देखें, दिस इज राउंड एंड पैलिसेड इज रेक्टेंगुलर. ओवल भी यू कैन राइट डाउन इट्स ओवल और इट्स रेक्टेंगुलर, एंड दिस इज राउंड. एक शेप हो गया. दूसरा आप देखें, कैन यू सी द शेप ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इनटू दिस सेल? This is sickle shaped. This is, and chloroplast is also one larger. Shape of the chloroplast could be the second difference. Okay, shape of cell. Then second is the shape of chloroplast. Okay, third is the number of chloroplast. Number of chloroplast is the third one. और इसके अंदर कोई चीज प्रेजेंट है? Can location of the cell be a different location of the cell? Location of the cell cannot be different. स्मार्ट इस पे हम लोकेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट हम कह सकते हैं, न्यूक्लियस कह सकते हैं, सॉरी. ठीक है, न्यूक्लियस आप देखें, in this unicellular organism, nucleus is you can see in the center, and in plant cell, the palisade cell, nucleus is at a side. और फिर इसी तरह हम वैक्यूल की भी प्रेजेंस और एब्सेंस बता सकते हैं. वी कैन नॉट सी अ वैक्यूल इन दिस सेल एंड देयर इज अ वैक्यूल प्रेजेंट इन प्लांट सेल. तो यहाँ पर हम वैक्यूल का भी हम बता सकते हैं.
फोर्थ पॉइंट, एंड देन फिफ्थ जो है वो हम कर लेते हैं पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस भी हमारे पास हो जाएगा। सो दिस इज द फिफ्थ पॉइंट। इसके अलावा यस सिमार एनी अदर पॉइंट? Is there is any other point, Simar? Okay, yeah, we have discussed 5 points, so these are sufficient. Yes, yes, size of chloroplast, it has one larger sickle shaped chloroplast, and 6 point can be the size of the chloroplast. ओके, अच्छा दीज आर द 6 पॉइंट्स। सो अच्छा, एक तो हमने इसमें जितनी प्रोवाइडेड स्पेस है हमने उतनी यूज करनी होती है। सो प्लीज ट्राई टू मेक अ प्रिसाइज सेंटेंस, एंड 4 वैलिड पॉइंट्स हमारे पास होने चाहिए फॉर गेनिंग 4 मार्क्स। ओके गुड। एक और क्वेश्चन भी हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इज describe how a molecule of carbon dioxide, अच्छा 1 is sufficient। हम पेपर 6 का एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पेपर अच्छा, ड्राइंग स्किल्स बेटा हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम ग्राफ जो है उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, ग्राफ जो है उसका क्वेश्चन अगेन इट्स मस्ट इन पेपर 6, और ग्राफ ड्रॉ करना इज वेरी इजी। तो हमने अब क्या करना है, हमने ग्राफ ड्रॉ करते वक्त कुछ चीजों को देखना है, कौन सी चीजें हैं जो हमने माइंड में रखनी होती हैं। जो फर्स्ट चीज है, ठीक है, स्किल्स हम देखते हैं। फर्स्ट इज द ओरिएंटेशन। ठीक है, फर्स्ट जो है दैट इज ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस। ठीक है, अच्छा अब ग्राफ में ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है दिस वन, ये क्या है, दिस इज द एक्स एक्सिस। और ये जो वर्टिकल एक्सिस है दिस वन, ओके, दिस इज वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। एक तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। दूसरी, अब आप देखें कि दे हैव आस्क्ड अस टू ड्रॉ दिस ग्राफ। ग्राफ में हमेशा आपने देखना है कि हमारे पास 2 वेरिएबल्स होते हैं, वन इज डिपेंडेंट एंड अदर इज इंडिपेंडेंट। अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, जैसे अभी हमने प्लांट न्यूट्रिशन को ही डिस्कस किया है, स्टडी किया है, तो हम प्लांट न्यूट्रिशन में देख लेते हैं। प्लांट न्यूट्रिशन में हमने अभी एक एक्सपेरिमेंट किया है। ये लिमिटिंग फैक्टर्स हम देखते हैं। ठीक है, टेम्परेचर है। टेम्परेचर एक्ट्स एज अ लिमिटिंग फैक्टर फॉर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसमें आप देखें टेम्परेचर एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, राइट। अच्छा, अब इसमें फोटोसिंथेसिस में एक टेम्परेचर है और एक रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। यस मैम, कैन यू टेल मी कि टेम्परेचर और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में से व्हिच इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड व्हिच इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल? एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट होता है। तो अगर हम
टेम्परेचर का इफेक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं ऑन फोटोसिंथेसिस, तो इनमें से कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और कौन सा इंडिपेंडेंट होगा? टेम्परेचर इज, यस गुड, ओके, टेम्परेचर जो है दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है photosynthesis that is dependent variable. Yes, good. Okay, rate of photosynthesis is dependent variable and temperature is independent variable. तो अब हमें ग्राफ ड्रॉ करते वक्त क्या करना है, एक्स एक्सिस के ऊपर हमें हमेशा जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेना है. इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑलवेज टेकन ऑन एक्स एक्सिस. समटाइम्स हमें कंफ्यूजन होती है ना कि हमने कौन सा वेरिएबल एक्स एक्सिस पर लेना है और कौन सा वाई एक्सिस के ऊपर लेना है. तो एक्स एक्सिस के ऊपर ऑलवेज देयर विल बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल. जैसे अभी टेम्परेचर है तो हमने टेम्परेचर को जो है लेना है ऑन एक्स एक्सिस, और हमने रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को लेना है ऑन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी ऑन वाई एक्सिस. ठीक है, ये तो हमें पता चल गया कि कौन सा वेरिएबल हमने एक्स एक्सिस पर लेना है और कौन सा वेरिएबल हमने वाई एक्सिस पर लेना है. एक चीज. अच्छा, दूसरी चीज हमने क्या करना है, अलोंग विद द वेरिएबल्स हमने इनके यूनिट्स भी लिखने हैं. दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, ओरिएंटेशन, लेबलिंग, लेबलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक्स एक्सिस पर हमने लेबल करना है एज वी आर टेकिंग टेम्परेचर, इसके साथ प्लस यूनिट्स. यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये लेबलिंग में आ जाएगा. ठीक है, दिस वाज फॉर द ओरिएंटेशन. हमें पता होना चाहिए एक्स एक्सिस पर हमने कौन सा लेना है, एंड ऑल्सो लेबल एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. अंडरस्टूड होता है, बट स्टिल हमने लेबल करना होता है. दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस. दूसरी चीज, हमने डिपेंडेंट वेरिएबल को लेना होता है ऑन वाई एक्सिस, मेंशन करना है, और इंडिपेंडेंट को हमने लेना होता है ऑन एक्स एक्सिस. राइट. अच्छा, तीसरी बात मैंने आपको लेबलिंग की बताई है. अगेन एक्स एक्सिस के ऊपर भी हमने लेबल करना है जो भी हमने फैक्टर लिया हुआ है. जैसे अभी इस एग्जांपल में वी हैव टेकन टेम्परेचर ऑन द एक्स एक्सिस, और इसके यूनिट्स जो है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. दिस लेबलिंग टेम्परेचर वेरिएबल प्लस यूनिट विल गिव अस 1 मार्क. लेबलिंग का हमें इस तरह नंबर मिलेगा और ओरिएंटेशन का एक नंबर इस तरह मिल जाएगा हमें. अच्छा, जो थर्ड चीज है दैट इज द, जो तीसरी चीज है, राइट, वो क्या है, वो है स्केल. स्केल अब हम किस तरह का लेंगे, स्केल जो है वो मोर देन हाफ अ ग्रिड हमें लेना है. लेट मी ज़ूम इट आउट. अच्छा, इसमें हमें बेटा स्केल लेते वक्त देखना है कि हमारा जो स्केल है वो सिंपल होना चाहिए, और स्मॉलर जो ये ग्रिड है मिनिमम, ये एक ग्रिड जो है मिनिमम हम देखेंगे कि रीडिंग कौन सी है. इट शुड बी रिप्रेजेंटिंग 1 नंबर, इट शुड नॉट बी लेस देन 1 ग्रिड. स्केल जो भी हम लेंगे लेस देन 1 ग्रिड नहीं होना चाहिए. ठीक है, इट शुड बी मोर देन 1 ग्रिड और मोर देन हाफ ग्रिड. हाफ 1 ही हम मोस्टली कर लेते हैं. ठीक है, 1 होना चाहिए. अच्छा, एक ये चीज, अब अगर हमने बार ग्राफ ड्रॉ करना है, बार ग्राफ में हमने क्या करना है, बार ड्रॉ करनी है. ठीक है, तो बार की जो विड्थ है, विड्थ शुड बी इक्वल. एक बार ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं. ठीक है, उसमें अगर हम 5 स्मॉलर बॉक्सेस ले रहे हैं, तो जो सेकेंड बार हम ड्रॉ करेंगे इट विल ऑल्सो हैव अगेन, आप देखिए कि अगर हम इसमें 5 बॉक्सेस ले रहे हैं, वी हैव टेकन दिस 5, 1 2 3 4 5, तो हम सेकेंड बार में भी क्या करेंगे, अगेन दैट बार विल ऑल्सो बी ऑफ 5 बॉक्सेस. अगर इक्वल बार, ठीक है, तो वो भी 5 बॉक्सेस की होगी. अगेन अनदर विल बी again of 5 boxes. The width of the bars should be equal. This is the width of the bar, so width of the bar should be equal. एक ये चीज.
अच्छा, सेकंड जो है आप इसमें देखें कि इस केस में अगेन हम क्या करेंगे, जो डिस्टेंस है बिटवीन द टू बार्स वी विल ट्राई कि वो भी हमारा इक्वल ही होना चाहिए, राइट। अच्छा, ये हमारे पास हो गया स्केल का। और स्केल के बाद अच्छा, अब हमारे पास जो प्लॉटिंग है, थर्ड नंबर विल बी फॉर द स्केल, और फोर्थ जो है दैट विल बी ऑफ द करेक्ट प्लॉटिंग। फोर्थ पॉइंट किसका होगा, दैट विल बी ऑफ द करेक्ट करेक्ट प्लॉटिंग। स्केल के बाद जो प्लॉटिंग है हमारे सिक्स लाइन ग्राफ, तो प्लॉटिंग हमने करेक्ट करनी है। ठीक है, जहां पर भी प्लॉटिंग आ रही है सो इट शुड बी करेक्ट प्लॉटिंग, इट विल गिव अस एन अदर मार्क। जो फिफ्थ है दैट इज ऑफ स्ट्रेट रूल्ड लाइन, इट शुड बी अ रूल्ड लाइन बेटा। ठीक है, तो हमने स्केल से इसको ज्वाइन करना है, नॉट विद हैंड। ठीक है, अब स्केल जो है, लेट्स टेक अ स्केल हियर। ठीक है, इसको हमें स्केल से ज्वाइन करना है लाइन को, ट्राई टू ज्वाइन द मैक्सिमम पॉइंट्स। ठीक है, तो जो फिफ्थ है दैट शुड बी ऑफ ruled lines. Connect or join these ruled lines, it will give us the fifth mark। अगर ये 5 मार्क्स का है तो 5 मार्क्स के लिए हमने इस तरह ज्वाइन करना है। फर्स्ट फिफ्थ वन इज और ruled line will give us the fifth mark। ओके, ये हमारी इंस्ट्रक्शंस थी फॉर ड्राइंग अ ग्राफ विच इज फॉर P6, राइट। और नेक्स्ट क्लास में हम ट्राई करेंगे कि हम कुछ P6 के ग्राफ के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लें। ड्राइंग के हमने रूल्स जो थे वो डिस्कस कर लिए थे प्रीवियस क्लास में, और वन बाय वन वी विल कीप ऑन डिस्कसिंग। हमारे इंशाल्लाह जो है विद इन 1 और 2 वीक्स ये सारे जो है कंप्लीट हो जाएंगे P6 के रूल्स, और फिर हम P6 की प्रैक्टिस करते रहेंगे कुछ क्वेश्चन की, राइट। एनी क्वेश्चन? Yes, Simab, is there is any question? Okay, thank you, Beta. Hope so it was productive for you. Take care and Allah Hafiz.